The big story today, we are talking about the Mudra Yojna, the Prime Minister Mudra Yojna, which marked its 10th anniversary today. Today marks 10 years of the PM Mudra Yojna. It was rolled out in April 2015. To mark the day, the Prime Minister met beneficiaries of the scheme that aims at giving loans to small businesses to help set up grassroots entrepreneurship. Don't worry, this is not some pain we are singing to a government scheme. Far from it. What we actually are looking at is who is the Mudra loan helping. And here is what emerges. First of all, the aim of this Mudra scheme was to ensure that even people who are first-time entrepreneurs from a modest background, people who are in villages, people who are in tier 3, tier 4 cities can get a loan. What really helps in this is the fact that Mudra loans are collateral free. You do not have to give a collateral to the bank. So even someone who doesn't have significant assets to put up against the loan, you don't necessarily need to have a house which you can put up as collateral, you will still get this loan. How has that worked out so far? Well, in the last 10 years, 52 crore loans have been given out, totaling to an amount of 32.61 lakh crore rupees. The target of this scheme also becomes quite clear when you look at who the key beneficiaries have been for the last 10 years. More than half of these loans in the last decade have been availed by who? By women. They stand at 68% of the beneficiaries. 50% of the beneficiaries come from the SC, ST, OBC background, and 11% are minorities. Today, it is a section of these people who were face to face with the Prime Minister talking about their last 10 years and their life. मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। ये आपके अगल बगल के लोगों के अनुभव में आता है? यस सर, मेरा जो गांव है गणेश धाम बाचावानी, मेरा एक गांव है भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर। वहां कम से कम 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-1, 2-2 लाख का लोन लिया और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। आप दिल्ली पहली बार आई? यस सर। वाह। और मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। अच्छा। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मैं अपने हस्बैंड से बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ लोन लेकर के कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ, तुम बिल्कुल अच्छे सजेशन दे रही हो, हमें करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड दोस्त वगैरह से बात किए तो उन लोगों ने बताया कि मुद्रा लोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप करिए। तो आप सर अभी 1 महीने का कितना कमा सकती है? सर 60,000 तक हो जाता है। अच्छा, 60,000 रुपया। तो परिवार को विश्वास हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ आपकी इस योजना की वजह से। चलिए, बहुत बढ़िया काम किया आपने। थैंक यू सर। आप जब दुबई से वापस आए तो आपका प्लान क्या था? नहीं, वापस आया कि मैं ये मुद्रा लोन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था, इसलिए मैं वो कंपनी रिसाइन किया है। अच्छा, आपको वहीं पता चला था? हाँ, और रिसाइन करके इधर आके फिर ये मुद्रा लोन को अप्लाई करके ये शुरू किया है। एक घर पर सूर्य घर का काम पूरा करने में कितना दिन लगता है? अभी मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन में एक घर का काम कर ले? काम करता है। आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। जिस तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप एमएसएमईज को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी जी। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बन करके रह गई है। समय समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं,
किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया, 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ? Well, data I'll be able to tell you whether it's Mudra Yojna or Jhuta Yojna. As with every government scheme, this also is being questioned. What is its efficacy? Has it really benefited anyone at all? But as is popularly said in Hindi, Aat Kangan ko aarsi kya aur pratyaksh kim pramanam, what is in front of you doesn't really need evidence. And guess what is in front of us? Data of the Mudra scheme from the time of its inception tells us a story. And that story has a rather ironic twist. Guess beneficiaries in which state got the maximum amount by way of loans in the last 10 years put together. It's a state where one of the main opposition parties to the BJP has been in government. Yes, we're talking about Tamil Nadu. Beneficiaries in Tamil Nadu availed of a total of 3.23 lakh crore rupees worth of loans. This amount is nearly 10% of the entire Mudra scheme amount disbursed so far. At second position is Uttar Pradesh with a disbursal of 3.14 lakh crores. But in third and fourth place are again two opposition ruled states that are getting the most benefits from the Mudra scheme. Entrepreneurs in Karnataka get over 3 lakh crore rupees worth of loans, which is nearly 9.5% of the total disbursal. And small businesses in West Bengal availed of loans worth 2.82 lakh crore rupees between the years 2015 and 2025. Both these states got almost 9% each of the total disbursals that have been done since the scheme came into place. Just to again put this in perspective, of the total loans availed under the Mudra scheme in the last 10 years, almost 30% are by beneficiaries who are living in states where opposition parties are in power. Clearly, people can look beyond the politics. They know whether something is Mudra or Jhuta. By the way, the data of the Mudra loans also busts another political claim that you will frequently hear, that states in the north of India are gobbling up all of our country's resources and finances. So let's see what happened with the Mudra loans. Does that theory really hold true? Again, it's Tamil Nadu here that has only 6% of our country's population but got almost 10% of the total loans. Karnataka has only 5% of our population, but it got 9.32% of the Mudra amount. The same story repeats itself in TMC-ruled West Bengal, where the share of the loans is 8.71%. Its population share is only 7.54%. And the much reviled Uttar Pradesh, which is held up as the villain every time for being most populous and always accused of taking up all the money of our country, its population is 16.5% of the entire population of India, but people in UP got only 9.7% of the total Mudra loan amount of the last 10 years. Again, the point is simply this: every single thing is fair game for politics in our country, but one must never lose sight of the fact that all citizens have claim over our country's resources, especially the most disempowered. And when a scheme actually manages to deliver on that aim of reaching women, backward classes, minorities, when it manages to bridge that artificial gap that is created between the north and south of India, two things need to be said. Credit where is due, and people who avail of schemes are far, far more intelligent than our naysayer politicians.